हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है दोस्तों। आज एक मैं बहुत ही यंग लड़के के साथ आपके लिए ये पॉडकास्ट लेके आया हूँ। और ये बहुत ही रिमोट एरिया से है, सिक्किम। जी हाँ, सिक्किम भारत का बहुत ही सुंदर प्रदेश है। गैंगटॉक से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर इसका एक छोटा सा गांव है, ग्यालचन सेरिंग। फर्स्ट चांस सीडीएस क्लियर, फर्स्ट चांस एसएसबी क्लियर। गांव का रहने वाला बच्चा किस प्रकार इसने इतनी दूर रहते हुए इसने ये एग्जाम क्रैक किया। लिसन टू हिज स्टोरी। कमाल की बात क्या है, इसको 12वीं तक कोई आइडिया नहीं था फौज में कि ऑफिसर बन सकते हैं। ये अपने 5 साथियों के साथ फौज में सिपाही भर्ती होने की ट्रेनिंग कर रहा था। बाकी फौज में सिपाही भर्ती हो गए, इसका सिलेक्शन नहीं हुआ। इसके बाद ये कॉलेज में गया। कॉलेज में इसने ऑनलाइन सर्च करना शुरू किया, फौज में ऑफिसर कैसे बनते हैं। और वहां इसको मेरी यूट्यूब वीडियो लगी, कहीं ना कहीं मेरे से कनेक्ट हुआ, और तब से ही रिमेन्ड कनेक्टेड विद मी ऑन वेरियस सोशल मीडियम्स। लेकिन कैसे इसने, जिस दिन इसको ये पता चला कि इतनी टाइप की एंट्रीज हैं, ऑफिसर्स एंट्री कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, और इसने डिसाइड किया मेरे लिए ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी ओटीए सबसे बेस्ट है। और इसने अपने आप यूट्यूब से और जो बुक्स है इसने बताया है, वहां से इसने अपनी स्टडी खुद शुरू करी। 3 साल तक कंसिस्टेंटली ही केप्ट प्रिपेयरिंग फॉर हिज सीडीएस एग्जाम ऑन हिज ओन। एसएसबी और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए ही वॉज फॉलोइंग मी एंड फ्यू अदर वेरी इंपॉर्टेंट यूट्यूब चैनल्स, जहां से इसको आइडिया हुआ कि मैंने अपना स्क्रीनिंग कैसे करना है, ओआईआर कैसे करना है, जीटीओ कैसे करना है, मॉक इंटरव्यू कैसे करना है, ग्रुप डिस्कशन कैसे करना है, लेक्चरेट कैसे करना है। इसने किताबें पढ़नी शुरू करी, अखबार पढ़ना शुरू किया मेरी बातें सुन के। तो बहुत ही जबरदस्त इंस्पिरेशनल स्टोरी है। अगर गांव का ग्यालचन सेरिंग कर सकता है, सिक्किम से इतना दूर उसका गांव है, आप भी कर सकते हो। और इसके पेरेंट्स से भी मैंने मुलाकात की इस मीटिंग के अंदर। फादर पुलिस में सिपाही थे, सिक्किम पुलिस के, हमेशा घर से दूर रहे। मदर होम मेकर। लेकिन कमाल का बॉन्ड है इस बच्चे का अपने पेरेंट्स के साथ। एंड कैसे इसने जो है फर्स्ट चांस में सेल्फ स्टडी करके सीडीएस क्लियर किया, सेल्फ स्टडी करके एसएसबी क्लियर किया, एंड वेरी सून ही इज गोइंग टू जॉइन ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई। सो सिक्किम से लेके चेन्नई तक की कहानी, छोटा ग्यालचन क्या करता था और इसने कैसे अपनी पर्सनैलिटी निखारी। और इसमें भी आप सबके लिए सबक है कि गांव का हर बच्चा चाहे तो ये एग्जाम क्रैक कर सकता है। एटलीस्ट जर्नी इंजॉय करें। और इसकी बातें सुनना, इसने बहुत जबरदस्त पंच लाइन यूज करी है। देखने में सिंपल लगता है बट ही इज मेड ऑफ स्टील। सो एंजॉय दिस पॉडकास्ट विच आई हैव गॉट स्पेशली फॉर यू। प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि ये इकलौता चैनल है जिसमें आपके लिए इतना कंटेंट है। और अभी मैं बहुत बढ़िया कंटेंट लेके आने वाला हूं। माई सेकेंड इनिंग्स इज फॉर योर फर्स्ट इनिंग्स। थैंक यू। जय हिंद। At the outset, Gyalchen Tshering, what a pleasure it is to see you. What a pleasure from Sikkim, and now recommended to join Officers Training Academy Chennai. How's it? कैसा लग रहा है? So the feeling is totally surreal, sir, as of now. I'm not able to feel totally what happened to me, sir, as of now. And this was your first SSB? Yes, sir. First CTS, first SSB, sir. Great. So very proud of you. Very, very proud of you. And a village lad from northeast of India making it to an officer in the Indian Army. Just describe your village, your family background. Your father works in police. Your mother is a homemaker. आपने बीएससी एग्रीकल्चर किया इम्फाल से। तो स्कूल से लेके just bring us till you applied for CDS. जी सर. So sir, I'll start with my 10th. 10th मैंने किया था सर सेंट जोसेफ स्कूल मार्टा, which lies in East Sikkim. So वहाँ पे it was a convent school. So वहाँ पे मेरा English ये basics बहुत strong हो गया था सर. So that helped me very much in this CDS journey. And then when I moved along, shifted to class 12th, there I shifted to DAV public school, sir. So वहाँ पे मैंने join किया as a science student there. So there also
it helped me in my CDS preparation as well, because science मुझे ज़्यादा focus करना नहीं पड़ा था जब मैं prepare कर रहा था, बस light revision was enough for me. So I would like to thank my teachers back there if they are watching this video. And then I moved on to college in Central Agriculture University. So that college I got in through state quota counseling. ये सिक्किम में after 12th के बाद होता है ऐसा. So वहाँ पे क्या होता है, हमारा फीस जो होता है वेव हो जाता है. So I have to pay very minimal fees there. So I didn't drop for MPBS coaching and others. So वहाँ से मैं चला गया Central Agriculture University. So there I started my actual formal preparation for the CTS. And right now this year I just graduated, and I also got through this SSB this time in this just a few days back, sir. And So now first I'll chance, share you about everything first chance. First chance Yes, में sir, CDS, everything. first chance में SSB. जी sir. How First old are CTS, you? first. How old are you? I just turned 22 this 30th of September, sir. Oh, this Gyalchen, this reminds me of my journey. I also cleared CDS in first chance, SSB in first chance, and joined OTA. That time it was called OTS Chennai in October 1983, exactly 40 years back. जी sir. अब बताओ अपना गांव के फैमिली के बारे में. जी सर, मैं जहाँ से आता हूँ वो जगह का नाम है क्यूजिक. So it's actually a very remote village in Sikkim. It lies in Ravangla subdivision. So it lies around 60 to 65 kilometers from the state capital Gangtok. And approximate population बताओ तो there are 120 houses. So if I take 5 people house as an average, so it comes around 600-700 people in my village. So basically पिक्चर्स, एक दो पिक्चर्स भेजना आपके गांव का. let people rest of the India see आपका गांव कैसा लगता है देखने में. जी सर, definitely after this session. So if I would put into words, I couldn't put much justice to my village. So from the place where I stay, when I open the window, I see Kanchenjunga, Mount Pandey, Mount Simbo. These are my views when I open my window. So I feel very blessed to be from where I come from. So from there I never, but unfortunately I didn't have much of a chance to spend much years in my village. So ever since class UKG I've been in a hostel. So from LKG I didn't stay for LKG, but UKG से लेकर अभी college ending तक I was always in a hostel, sir. Always in a hostel environment. इतना छोटा बच्चा Convent में hostel. जी सर, since UKG sir. And hostel में कहाँ पढ़ रहे थे आप? Where were you studying? My hostel journey, I have shifted many schools, लेकिन सभी schools में hostel में था. So KGs I did it from my just village school, Little Flower School. So there LKG में मैं घर से ही गया था. अपने grandfather मुझे लेके जाते थे school, फिर वापस घर छोड़ते थे. फिर grandfather ज़्यादा old हो गए, फिर मम्मी पापा मुझे trial के लिए UKG में hostel भेज दिया. फिर मैं वो UKG पूरा साल hostel में रहा. And then I went on to Namchi Public School, where I completed till class 4th there. So वहाँ भी मैं I stayed in a private hostel there. I did private hosteling. I was never a boarder, sir, but I was always in a private hosteling scenario. So वहाँ मैं गया NPS में 4 साल वहाँ पर रहा. फिर I shifted to St. Joseph School Martam since class 5 till 10th. So वहाँ भी मैं hostel में ही रहा, sir. And after that फिर मैं शिफ्ट किया DAV पब्लिक स्कूल. वहाँ भी मैं हॉस्टल सिनेरियो में ही था. फिर शिफ्ट हुआ इम्फाल. वहाँ भी मैं 4 साल हॉस्टल में ही बिताया. तो आप अपनी जिंदगी के 22 साल में से घर में सिर्फ 5-6 साल रहे हो, बाकी टाइम हॉस्टल्स में रहे हो. जी सर, जैसे कि बोल सकते हैं सर, कोरोना मेरे लिए बून की तरह आ गया. कोरोना में ज्यादा स्पेंड कर पाया घर पे. ओके, हाँ, कोविड में. तो आपकी मदर, आप कितने बहन भाई हो Gyalchen? How many? I just have a younger sibling. She's a sister. She's currently pursuing her engineering in electronics and communication in NIT Sikkim. Oh, great. So mother को जब आप गए, how was your mother's? जब भी आप वापस आते थे, what was your mother's reaction to see her son?
Actually, I think this thing bonded me and my mother very much. So अभी भी मैं और मम्मी, the level of bonding we have, I think it's over the world. ग्रेट. एंड फादर क्या करते हैं आपके, ग्यालचन? My father works in the Sikkim Armed Police. So right now he's currently posted in Pangthang. He's in the camp itself. तो ही जॉइंड पुलिस एज अ सोल्जर? Yes, sir, as a sepoy. एंड अब क्या Yes. रैंक है उनका? अभी सर ASI है sir. एएसआई. ओके. जी sir. तो वो तो बहुत खुश होंगे, एएसआई हैं, और बेटा जो है वहां से कोई अफसर बना है आपके आसपास के गांव से कभी कोई? गांव से कभी नहीं सर. So when I look at the Sikkim scenario, so Sikkim has given a lot of boys, young boys, जब फौज में सिपाही, मैं counting myself, sir, when I was in my 11th and 12th, we were a group of 6 friends. So वहाँ पे we were preparing for joining the Indian Army as a sepoy. So 5 of my friends, they are already in the Indian Army then. So me, I was left out. I couldn't join because I was short of the required age limit. We prepared. We used to run. We used to take 6 kilometers run in the mornings. So that was initial phase where I wanted to join the armies. My enthusiasm was that high that I wanted to join just any house. So as फौज की यूनिफॉर्म, यू वांटेड टू जॉइन, फौज की यूनिफॉर्म पहननी थी इनिशियली, सिपाही भर्ती होना था आपने? जी सर. वाह. सो सर इंस्पिरेशंस में देखो तो सर इनिशियली इतना ज्यादा मुझे अवेयरनेस नहीं था सर. तो अभी जाके देखता हूँ सर. आई रिसेंटली कॉन्टैक्टेड कर्नल डीएन भुटिया सर, हु इज द चेयरमैन ऑफ एक्स सर्विसमैन सैनिक बोर्ड इन सिक्किम. सो अभी पता चला इतना ऑफिसर्स भी थे हमारे सिक्किम से, मेरे कम्युनिटी से. सो एंड ग्रेट एग्जांपल वुड बी सर विक्टोरियल क्रॉस गंजू लामा. No, I know there are officers, but बहुत कम है, very few. You know, Yes, sir. सिक्किम इज अ स्मॉल स्टेट, रिमोट एरिया है. तो अब आपके स्कूल का, डीएवी स्कूल, आपके सेंट जोसेफ स्कूल और आपके गांव में क्या रिएक्शन है जब उनको पता चला कि ग्यालचन सेरिंग इज क्लियर्ड एंड ही इज गोइंग टू बी एन ऑफिसर इन द आर्मी? So actually, I've kept it very much of a secret. So I've just shared it among my close relatives and my parents, my close friends, just within this circle. So it hasn't gotten out, sir, because I'm new to it, sir. I was scared until yesterday, sir. Till you said, I was still scared of the merit thing. So merit का issue हो जाएगा लग रहा था. नहीं. I've told you this. CDS entry merit is never an issue, whether it's IMA or OTA, and you are definitely going. तो अब मुझे बताओ कि जब एनडीए वगैरह था तब did you have an idea, did you sit for NDA exam? Totally, I had zero awareness about NDA. So we were just 6 group of young boys from Sikkim who just wanted to join the arms. Oh my God. तो ये CDS का कहाँ से आपको पता चला, ग्यालचन? Who motivated you? How did you learn कि you can join CDS and you can become an officer through graduate entry? So totally through online sources. Till I ended my class 12th journey, I was naive, sir. I had zero idea about officers entry. So when I joined Central Agriculture University, then I used to surf through internets. I used to see like how can we join the Indian Army through other sources, because that part of my life had already passed away, where I would have joined in as a sepoy. So I wanted to do something else then. But still army was in my mind. So I used to surf through internet. तो मुझे वहाँ पे दिखा CDS entry, JAG entries, technical entry schemes, graduate streams जहाँ से मैं offices में entry ले सकता हूँ. फिर मैंने सभी को देखा, अच्छे से पढ़ा, तो सब कुछ देख लिया मैंने. सर CDS OTA लगा, this is something I can achieve it. So I focused on it, sir, since then. So you decided कि ये मेरे को लग रहा है इसमें maths है नहीं, there is no maths, it has only 2 papers, it seems reasonable, you can do it. तो when did you fill up the form? Sir, most probably it must be this January or December. This January, okay, December, January. And you appeared in this April वाला exam? April exam, sir. Okay. So how did you prepare? अब बताओ सेरिंग की, आपने ग्यालचन सेरिंग, हाउ डिड यू प्रिपेयर एंड मतलब क्या आपकी स्ट्रेटजी क्या थी फॉर इंग्लिश एंड फॉर अदर सब्जेक्ट्स?
So unlike like others whom you speak to, so my journey for preparation would be a little bit different. So जैसे मेरा awareness बढ़ा, मुझे YouTube videos देखे सर, तो I was already in my second year. So मुझे पता चला एक बुक आता है CDS Pathfinder अरिहंत का. So just मैं अपने gut feeling पे गया, खरीद लिया सर अपना monthly pocket money से. So फिर मैंने वो खरीद लिया. फिर I used to see, फिर अपना academics भी देखना था सर. I used to have maintain a good OGPA. So side by side, every day I used to go for the Pathfinder at least 1 hour, 2 hour every day. So there was a consistency sir, but I used to take breaks at times. कभी-कभी नहीं होता था. लेकिन it went on for the next 2 years, 3 years sir. Till this CDS thing happened. I was always constantly studying this Pathfinder book. And yeah, so last few months I made all the revisions and then that was it. So one thing comes up very clearly, जो मैं भी बच्चों को YouTube के थ्रू एवरीडे बताता हूँ कि start early. You have to be proactive. First habit that you need to inculcate अगर आपने अफसर बनना है वो है habit of proactivity. तो you started much earlier. So 2 साल almost you worked on yourself. Yes sir. तो ये तो था रिटर्न के लिए. व्हाट अबाउट पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स, एसएसबी, ये आइडियाज कैसे आपने सो दैट यू आर रेडी फॉर द एसएसबी? So for SSB also it started back then when I was in second year itself. So you were one of the first officers whom I met while surfing in the internet, on the Instagram, on YouTube. So I've always taken you as my personality guru sir. So whatever personality, whatever I'm speaking, whatever confidence I exude, it's everything because of you, sir. And how you taught me to inculcate OLQs, how you taught me to inculcate OLQs in daily life, daily activities, how you asked me to read. Before you came into my life, sir, I was not a very keen reader, sir. So after you came in, sir, you asked me to do this editorial readings and you encouraged me to read novels. So after that, I have read quite a few novels. So if I may name, it would be Sikkim, a Requiem for the Himalayan Kingdom, written by Andrew Duff. So I read about my state, so written by someone else. And after that, I've read a book written by Lieutenant General Satish Dua, also India's Brave Hearts. And editorial, I used to read it like once a month, once a week, twice a week, whenever like physical newspaper was available in our college. And that was the personality part, sir. For the next 2 to 3 years, I was for the SSB part, बस personality develop हो रहा था, sir, बस आपके बदल. फिर जब मेरा clear हो गया, फिर मैं focus करने लगा इस SSB preparation पे. तो मैंने देखा सर OIRS के लिए मैं टेलीग्राम चैनल्स पे जाता था. ये डिफेंस डायरेक्ट एजुकेशन के बहुत सारे PDFs आते थे सर. सो वहां से सैंपल्स ले लेता था सर. फिर जाता था. आई यूज्ड टू गो टू वॉच यूट्यूब चैनल्स ऑफ फिजिक्स वाला वेयर दे यूज्ड टू गिव मी आइडियाज हाउ टू सॉल्व दिस OIRS. सो OIRS वैसे ही मैंने अपने आप एवरी इवनिंग, एवरी मॉर्निंग आई यूज्ड टू डू इट कंसिस्टेंटली. सो फिर OIRS का वो हो गया सर. फिर PPDTs के लिए PPDTs एंड साइक्स के लिए सर आई यूज्ड टू फॉलो कर्नल, if I'm not wrong, कर्नल बुद्धि राजा सर. कर्नल बुद्धि राजा. अच्छा. साइकोलॉजी के लिए सर. फिर GTOs, I was totally blank when I went into this SSB journey. The first day of my GTOs was totally miserable for me, sir, I would say. It was total learning process for the day one of GTOs. Then second day, I aced it, sir. So इसका मतलब Gyalchen, you use whatever resources were available. मतलब yes, sir. You got inspired जब you got in touch with me. हमने एक बार इंस्टा लाइव में you said मैंने आपसे बात की थी. आपने रीडिंग स्टार्ट की, एडिटोरियल पढ़ने शुरू किए, started working on your officer like qualities and other things, and then OIR कहीं से किया आपने, PPDT कहीं से की, कुछ कहीं से किया, and you started this journey
और उस टाइम पे वर यू वाचिंग आर यूट्यूब चैनल एंड अदर इंटरव्यूज वगैरह जो मैं लेके आता हूँ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स? Yes, sir. Yes. Ji, sir. You used to interview the AIO ones, हम्म NDAs, yes. So हम्म that encouraged me, sir. एंड वेयर वाज योर एसएसबी? SSB, 18th SSB Prayagraj, sir. एंड कभी आप ये बताओ मुझे, सिक्किम से बाहर कितनी बार गए हो? हैव यू एवर ट्रैवल टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया? Sir, interestingly, yes, I have been to Gujarat for a month for my entrepreneurship training, which I got sponsorship from my college itself. ओके. And I've been to Delhi, sir, हम्म and almost a few parts of Northeast, sir. This side, Delhi and Gujarat, sir. Excellent. So that must be quite an eye opener to see what India is. Yes, sir. So this is amazing, Gyalchen. और ये बताओ, during the SSB, you are self-taught, you have had mentors. आपने मतलब मेरी बातें बहुत सुनी है, औरों की भी सुनी है. But during the SSB, how did it go? How did you clear your screening? वो जरा बताओ, so that other children जो whether they are in J&K sitting in Jammu and Kashmir, in Kargil or Kupwara, और सिटिंग इन गुजरात या कहीं पे भी हैं, दे गेट इंस्पायर्ड कि अगर ग्यालचन कर सकता है हम भी कोशिश कर सकते हैं. जी सर. So SSB एक total different story था सर मेरे लिए. So this time I thought I was underprepared, honestly speaking, sir. So जब मैं गया, I was a little underconfident when I reached there. So the morning we reported, फिर चला हमारा OIS अच्छे ठीक ठाक गए सर. फिर चला PPTTs भी I felt I did well in it. So जब नरेशन का टाइम आया सर, नरेशन में मेरा I didn't do well in it. So just how I'm fumbling right now, I got nervous, sir. So वहां पे मेरा फंबल हो गया सर. फिर I thought ठीक है सर, फर्स्ट ट्राई है. फिर ठीक, आई वाज पेसिमिस्टिक अबाउट इट. फिर मुझे लग रहा था नहीं होगा. फिर जीडी चले गए. फिर जीडी में सब फ्रेशर्स थे. सो मोस्टली दे केम फ्रॉम कोचिंग बैकग्राउंड्स फॉर एसएसबी. सो जब हम 15 पीपल बैठ गए थे तो शुरू हुआ जीडी. सो आई डिडंट हैव मच अवेयरनेस अबाउट इट. तो वो शुरू हो गए. दे क्रिएटेड अ फिश मार्केट सिचुएशन. फिर फॉर द नेक्स्ट 1 or 2 minutes आई वाज टोटली ब्लैंक. आई वाज लाइक इंटिमिडेटेड बाय देम. फिर माय सर्वाइवल इंस्टिंक्ट किक्ड इन. फिर मैंने अपना वैलिड पॉइंट्स रखा सर. टाइम जब भी अपॉर्चुनिटी मिला मेरा अपना पॉइंट्स रखा. फिर मैंने अपना ग्रुप के साथ अग्री भी किया. फिर आई डिडंट ओवरपावर एनीवन. सो आई थॉट दैट वाज द की देयर. सो जब फिर लंच, आई लव दिस पार्ट, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट किक्ड इन. ये दिस इज व्हाट आई टेल, दिस इज द फाइट इन यू कि यार अभी नथिंग इज लॉस्ट, गिव इट योर बेस्ट, है ना? So you spoke. जी सर. तो फिश मार्केट में भी मौका मिलता है. डोंट गेट इंटिमिडेटेड, है ना? डोंट गेट एग्री विद समबडी और गिव योर पॉइंट इन अ वेरी हम्बल नाइस वे. सो दैट क्लिंच द इशू फॉर यू, क्योंकि आपका पीपीटीटी अच्छा लिखा था आपने, ओआईआर अच्छा कर दिया, ये अच्छा हो गया. इवन इफ नरेशन वाज नॉट सो गुड, तो आप यू क्रॉस दैट हर्डल. जी सर. सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जैसे इतना दूर आया था, कुछ तो करके ही जाना. I love this survival instinct. यही हमारी स्ट्रेंथ है ग्यालचन. This is what we must work on. Wonderful. तो कितने बच्चे थे? How many got recommended in the first stage? 60 had reported, sir. फिर 29 got screened. Okay, 60 had, so good. 50% के आसपास. Very good. This happens if you go through यूपीएससी एंट्री. ये भी बता दो लोगों को, एनसीसी में और टेक्निकल एंट्री में बहुत कम सिलेक्शन होता है फर्स्ट स्टेज से, बिकॉज बहुत लोग आते हैं. जी सर. सर आई वुड लाइक टू मेंशन बिफोर सर, एक मैच मेरा छूट गया सर. आपसे एक और लिंक था मेरा. सो व्हेन आई फर्स्ट सॉ यू, मेरा जो क्लिक हुआ सर आपसे, सो द फर्स्ट वीडियो आई वॉच्ड was a short clip where you said you hailed from a village background, from your journey to village, from village to a major general. So that clicked to me. Sir, I used to follow you regularly. थैंक यू ग्यालचन. मुझे मतलब मैं ना बता नहीं सकता हूँ
जब आप जैसे बच्चे मुझे फीडबैक देते हैं इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, अक्रॉस कंट्री, कि सर हम आपको, इवन अंडमान में ग्यालचन बच्चे हैं जिनको हम मेंटोर कर रहे हैं, कारगिल में, एंड कैन यू इमेजिन पुलवामा एंड कुपवाड़ा एंड अनंतनाग, जहां इंसर्जेंसी प्रोन है, जहां मतलब मैं बता नहीं सकता वहां के क्या हालात है बच्चों की, वहां से पढ़ के कॉलेज से, और वो भी बच्चे जो है कोशिश कर रहे हैं। देखो चांस की बात है, कोई बन जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। सो दिस द बेस्ट पार्ट ऑफ, हमने टेक्नोलॉजी को यूज किया, ये भी कोविड में हुआ गया। दिस इज ऑल थैंक्स टू कोविड। जी सर। अच्छा, तो अब बताओ सेकंड स्टेज में अभी कैसे रहा आपकी जर्नी एसएसबी की? फिर सेकंड सेकंड स्टेज शुरू हुआ सर, नेक्स्ट डे साइकोलॉजी टेस्ट। सो द नाइट लाइंस में गए सर, फिर लाइंस में मैंने रिपीटर से बहुत आई टुक आइडियाज फ्रॉम देम, तो जो कोचिंग से थे उनसे मैंने हेल्प लिया। फिर आई मेट लाइक वेरी गुड फ्रेंड्स देयर, so they were very helpful. I thought like mostly everyone deserved to be an officer there, so they were very helpful towards me as a fresher. They were always helping me, so उन्होंने भी हेल्प किया। सो पहले से भी थोड़ा बहुत प्रिपरेशन था साइक्स के लिए। फिर टैट स्वैट एसआरटीज एंड सेल्फ डिस्क्रिप्शन, तो सर आई थिंक आई स्टेप दिस वेल। फिर फिर था इंटरव्यू। इंटरव्यू मेरा फर्स्ट दिन में था सर, इट वाज शेड्यूल्ड एट फ्रॉम 4 to 5 p.m. सो इंटरव्यू में चला गया था। आई वाज लाइक वेटिंग फॉर अराउंड 4 to 5 hours, फिर मेरा टर्न आ गया। फिर मैं चला गया था अपना बोर्ड का प्रेसिडेंट टू माय इंटरव्यू सर 18 SSB। फिर जब मैं अंदर गया, फिर as soon as I entered, opened the door, questions started for me right there. Badness, but as soon as when I just opened the door, questions were put क्या forward for me. क्या थे? What were these questions? So as soon as I entered, he asked me, tell me about a journey from Sikkim to the Prayagraj SSB. Yes. So I answered it properly, sir. Communication wasn't an issue in my interview. I felt, sir, at least. So I was quite comfortable with my interview officer. So I only faced a problem when he asked me a quantitative aptitude question. So मैं फंस गया था, sir. Actually, he asked me my interest. So I said I'm a sports enthusiast. So I play volleyball, basketball, you know. So he asked me dimensions of the basketball court, and then there he asked me some quantitative here, and then he confused me. So there I got stuck. So that was that, sir. Baki, everything went well, sir, in my interview and my psych tests. Then And next day was he asked you about current affairs and all, कुछ पूछा awareness current affairs का? जी सर, questions were basically more of my PIQ based. फिर सर गए quantitative aptitude पे. So and after that he went general questions also, like he asked me about significance of South China Sea, and Manipur. Like I came from Manipur, so he asked me about the Manipur scenario, my views on it. So that was that. आपने क्या बोला? Tell me what are your views on Manipur now that Manipur is almost 6 months, it is still in turmoil. So मैंने वहाँ जो बोला सर, I said कि I don't have a biasness in like between those communities. I think it's a very complex situation, so which can only be solved through this diplomacy. So that was my take on it. So बाकी तो फिर इस साइड देखेंगे तो उस साइड बुरा लगेगा, इस साइड देखेंगे तो उस साइड बुरा लगेगा। But आप इम्फाल में थे। Now I want to really hear you. You were in Imphal. Yes. And just tell me, ये 3rd May से लेके, frankly, I have also, मैंने भी पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया, आपने देखा होगा मेजर अमित बंसल के साथ, मैंने क्लास भी ली है मणिपुर पे एक्सप्लेनिंग। तो हाउ डू यू फील, मतलब where can we draw the line and how peace can be achieved there? So जब ये violence शुरू हुआ था सर, I was still there in my college. So it was 4th of May when the unfortunate incident happened in Churachal. Yes, sir. And just where my college was located, just few kilometers, 1 to 2 kilometers away from it, light Kuki communities place. So it was in Imphal. So there were the minorities there. So I saw live visuals of violence happening.
यहाँ मेरा कॉलेज था, just in the opposite side I could see houses burning, people running away, and people going in there attacking people. So it was a very bad situations at that time, at that point of time. फिर every day चलता रहा ऐसे ही, burning houses, closed down everywhere, and उधर hills में cookies attacking the Meiteis, here Meiteis attacking the cookies. I was just going here to and fro. फिर we were evacuated on 24, I guess on around 20s of the May by our state government. और वहाँ के मणिपुर पुलिस ने हेल्प किया था हमें वहाँ से इवैक्यूएट करने के लिए. और when I see my views on it, so I feel it's a very complex situation. It can only be solved by when the administrators and the politicians would sit together. So how I see it going is, even Naga communities, they could put their foot forward to bring peace in Manipur. But actually, so I feel it's a very complex situation. So achieving peace, I think it's gonna take very long, sir. Very long. The divide is very wide now. Yes, very wide. If initially It's steps going to were stay. taken to stem it, immediate steps, that is where leadership has to step in. जी सर. अच्छा, तो मणिपुर के बाद और उसके बाद और क्या पूछा आपसे? हॉबीज, इंटरेस्ट, व्हाट आर योर हॉबीज एंड इंटरेस्ट्स? My hobbies, I've always been a sports enthusiast. बचपन से, since class 8, I've been representing my schools, and thereon I've always been into sports, volleyball, basketball. Apart from football, I've participated in almost every sports available that was like available to me. Excellent. And did they ask you anything on organizing ability and things like that? Yes, they asked me about my. Actually, I had written in my PIQ paper that I once held a position of president in Sikkim Agriculture Students Association. So, उन्होंने पूछा था, what did you achieve there? What were the initiatives there? So, sir, जैसे कि जो I was very honest about everything, sir. So, मैंने जैसे बोला, I used to take on whatever was being carried forward in the organization. I used to organize general meetings. फिर मैंने there was one more Sikkim association in Manipur for the medicos. So मैंने अपने relations कायम रखा उनके साथ. So I didn't let it part the associations. So वहाँ का engagement बढ़ाया मैंने. फिर farewells जो थे वहाँ का students का, वो organization में मैंने अपने initiative लिया सर. फिर उन्होंने पूछा, what were your initiatives when this violence happened? So I was very honest about it. At that point of time, I wasn't the president, and we as fourth years in my college, we had a different set of problems and different set of like things to do. So I wasn't much involved in the association when I reached my fourth years. Excellent. And after the interview, कैसा लगा आपको? कि क्या फीलिंग थी आपकी? फ्रैंकली, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, क्या होगा? So at that point of time, I didn't have a feeling about selection and non-selection. बस लगा इंटरव्यू अच्छा गया, बस वो एप्टीट्यूड अच्छे से क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाया, बस वही लगा वो टाइम पे. और जीटीओ में वापस जाऊं तो ग्रुप डिस्कशन, लेक्चरेट, क्या था आपका टॉपिक ग्रुप डिस्कशन का? ग्रुप डिस्कशन से हमने फर्स्ट में चूज किया था वो what are the causes of detrimental of India, like what are the factors affecting our growth of our nation. So all people put their own views. फिर अच्छा था ग्रुप डिस्कशंस भी. फिर नेक्स्ट जहाँ पे हम चूज नहीं कर सकते थे, वहाँ पे हमारा टॉपिक था roles of momentarily pressures for detrimental of youth in this country. और लीड्स क्या थी उसमें? So leads as in sir, मतलब what did they give, what are the GD में बोला होगा ना, on what lines you can speak, what were yes, the ये youth का detrimental के लिए क्या क्या factors responsible, that was the thing. So the leads were momentarily pleasures, the internet, and I think the materialistic approach. So our group basically went in with the momentarily pleasures. और तुमने क्या बोला?
So I put forward कि मेरा पॉइंट था सर, मोमेंटरी प्लेजर्स ही है जो यूथ को डिटोरिएट कर रहा है डे बाय डे. दे आर शिफ्टिंग द यूथ फ्रॉम द गोल फोकस्ड माइंडसेट. सो मोमेंटरी प्लेजर्स जो होता है, एवरीथिंग माइट नॉट मस्ट नॉट बी मटेरियलिस्टिक. सो स्लीप कैन ऑल्सो बी ए मोमेंटरी प्लेजर. सो ये पॉइंट था जो हम फर्स्ट से डिसएग्री कर रहे थे. फिर फर्स्ट का पॉइंट तो चला ही गया, ऐसा मटेरियलिस्टिक अप्रोच था. फिर आ गया द मीडिया. सो द मीडिया में भी थोड़ा चर्चा हुआ. सो बट एवरीवन वी केम टू अ कंसेंसस दैट मोमेंटरी प्लेजर्स इट्स द मेन रीजंस. Okay. And lecture Lecture, I chose my topic as OTT platforms. So उसमें what did you say? Advantage, disadvantage, या I first briefed about what OTT platform is. So, and I briefed about the advantages, disadvantages, and the way forwards. So all this ये अच्छा था, confident था, you had no hesitation. And yes, at that point of time, communication wasn't an issue, sir, for me. Yeah, communication wasn't an issue because school say you were in you were in a school जहाँ पर you were encouraged to read and जी, है ना? जी sir. Excellent. So what are your now father सब खुश हैं, तो क्या सोच रहे हो कि what kind of regiment would you like to join? So definitely, sir, 9 para sir was my dream. Sir. Oh, great. So I plan on joining it. Why 9 para sir? So I like the way they work, the way they operate. So for that, I've always been inspired by Major Vivek Jacobs. Jacob, So I know. वो जो कहते हैं, yes, how he's such a he does what he says. So Yeah. that kind of approach I want to take forward in my life. Exactly. And Gyalchen, being a SF is a state of mind. Even people like me who joined infantry, commanded mechanized and armored formations, it is your approach. It's your approach to life. और वो approach आपको कहीं भी कामयाब बना देगा. इसके लिए जरूरी नहीं है, even if you don't get SF, there are no vacancy, or for some reason, wherever you will go, this attitude will take you forward. जी सर. है ना? ये जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, ये जो आप the kind of fighting spirit you have in you, this will take you forward in wherever you get, whichever regiment. But I'm sure you'll join infantry, it looks like. Yes sir, definitely. Definitely. ये नहीं है कि वहां असम रेजिमेंट वगैरह ज्वाइन कर लो तो नॉर्थ ईस्ट में है, सेंटर भी ऐसा. नहीं सर, मुझे बस 9 para SF से लगा हुआ है. एक्सीलेंट, वेरी गुड. तो अब ग्यालचन, मैं बता नहीं सकता मुझे तुमसे बात करके कितनी खुशी हो रही है. अब जरा अपनी एडवाइस दो टू यंग बॉयज एंड गर्ल्स जो सिक्किम में, मणिपुर में, या हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में जहां बैठे हैं, तेलंगाना में, गांव देहात के बच्चों को जो who are now in college, how they can change their life, small steps if you can from your life. So sir, what I would say to them is just don't lose hope and keep inculcating all whatever you want to achieve. So it might always not be the army for everyone. So जैसे किसी को कुछ administrative पे जाना है, so just behave, align your behavior towards what you want to be. So शुरू से करना चाहिए, आपको align करना चाहिए अपना behavior, तभी आप achieve कर पाओगे जो आप achieve करना चाहते हैं. So for me, it worked for me, I feel, sir. So I always try to align what the forces wanted. So I think the forces gave me back. I love this phrase. पहली बात मुझे तुम्हारी वो बहुत पसंद आई थी. And this aligning your behavior. You mean setting goals? कि goal set करो, vision set करो, mission set करो अपने आप के लिए, something like that. जी sir. Short term goal set करो, achieve करो, फिर next पे जाओ. वो तो हम पढ़ाते ही रहते हैं, हाउ टू सेट स्मॉल गोल्स. पहले बड़ा गोल रखो मन में, वहां जाना है. वो तो मैराथन है ना, दैट इज अदर साइड ऑफ द हिल, यू डोंट इवन नो वहां कैसे जाएंगे, बट स्मॉल स्टेप्स. एंड ये बताओ फॉर हाउ टू डेवलप कम्युनिकेशन. देखो, कम्युनिकेशन स्किल के बिना ग्यालचन ऑफिसर बन नहीं सकते, ये तो देखो, दिस इज गिवन.
दैट इज व्हाई मैं इतना एम्फेसिस करता हूँ इस चीज पे। उसके लिए रीडिंग है, राइटिंग है। तो व्हाट डू यू फील, हाउ कैन वी डेवलप दिस इन एज अर्ली एज पॉसिबल? So as you said, sir, communication के बिना तो forces में I think it's totally impossible. Impossible would be the correct word for it. So communication is the basic for it. So communications कैसे develop कर सकते हैं? So increase the social interactions. So basically English पे interactions ज़्यादा बढ़ाएं, फिर इंग्लिश नॉवेल्स पढ़ें, फिर एडिटोरियल्स पे फोकस करें, फिर एकेडमिक्स से भी जब आप इंग्लिश इंग्लिश में करते हैं तो वहां से भी आपका वो इम्प्रूव हो जाता है सर। एज आई फील एवरीथिंग शुड बी टेकन एज अ जर्नी, नॉट टू टेक इट एज अ क्रैश कोर्स। It's a journey, it's a marathon, it's a journey. Take small steps but be consistent. यस सर, बी लंबा रेस का घोड़ा। मैं वही कहता हूँ, जिंदगी 100 मीटर की दौड़ नहीं है, मैराथन है। और किसी के लिए शॉर्ट मैराथन है, किसी के लिए बहुत लंबा लंबा रास्ता है। तुम्हारा सिक्किम से प्रयागराज एंड टू चेन्नई, यू विल बी इन चेन्नई विच इज सो डिफरेंट फ्रॉम योर प्लेस। यस सर, डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। हाँ, यस सर, यस सर, बट आई एम full of will and full of enthusiasm sir. नो, आई कैन सी दैट, आई कैन सी दैट। जब जिंदगी में यू गेट व्हाट यू वांटेड फॉर सो मेनी इयर्स, एटलीस्ट कॉलेज में जाके तो आपको हो ही गया था जब आपने स्टडी कर लिया यार सीडीएस करना है। जी सर। तो दिस इज वेरी गुड। उसके अलावा हैबिट्स, पर्सनल हैबिट्स, क्योंकि बहुत से बच्चे ज्ञालचंद जैसे आपने बताया भी, आप कॉलेज में थे, हॉस्टल में, व्हाट आर द बैड हैबिट्स आजकल के बच्चों में? क्या बैड हैबिट्स हैं यंग में, और गुड हैबिट्स की तरफ कैसे लाया जा सकता है? लिसनिंग फ्रॉम यू फ्रैंकली। सो फ्रैंकली आज के जनरेशन को देखे तो सर, मोमेंटरीली प्लेजर्स, जो मेरा जीडी का टॉपिक भी था, सो आई थिंक दैट्स द मेन पॉइंट जो यूथ को डाइवर्ट कर रहा है अपना गोल फोकस बिहेवियर से। सो मुझे लग रहा है जैसे कि ज्यादा सोना आराम हराम है जैसे बोलते हैं सर। फिर ज्यादा सोना वो हो गया, फिर मोमेंटरीली प्लेजर्स एज इन अभी पढ़ाई नहीं किया, बाद में रिग्रेट करना। सो कुछ समय के मस्ती के लिए बाद अपना फ्यूचर को गिव अप कर देना। सो these are the problems with the generation I feel, and westernization too sir, जो अपना कल्चर अपना रूट्स बोलते हैं। so I feel a man should always remember his roots. So रूट्स को आप हमेशा अपने पास साथ में चला के ले जाना चाहिए। so ये सब आप इनकलकेट करके रखेंगे तो you'll always be focused towards your goal I feel। ये सब से दूर रहेंगे तो फिर आप गोल फोकस्ड रहेंगे सर। नहीं, बहुत अच्छी बात आई। एक चीज और मुझे बताओ ज्ञालचंद, एक तरफ तो ये बच्चे हैं प्रोक्रेस्टिनेशन वाले, who are into bad habits, काम ही नहीं करना, सोते रहना, या watching, binge watching and smoking, and these days these things have become very common. Now tell me the other side. A lot of young people are mentally not happy. They are in state of depression या mental issues हैं उनको। what do you advise? क्योंकि मेरे से बहुत लोग पूछते हैं कि सर क्या करें, तो what will you advise? You must have seen, आपने देखे होंगे ऐसे बच्चे। देखे भी है सर, एक्सपीरियंस भी किया है खुद सर। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम मेरा जो था, आई वाज टोटली डाइवर्टेड टुवर्ड्स सीडीएस। तो जब मेरा ग्रेजुएशन हो गया था, फिर आई हैड टू अप्लाई फॉर मास्टर्स। फिर मास्टर्स पे ज्यादा मैं पढ़ाई कर नहीं पा रहा था। फिर मास्टर्स मैंने अपना यूनिवर्सिटी एग्जाम दिया, वहां भी नहीं हो पाया सर। फिर गया जूनियर रिसर्च फेलोशिप पर, वहां भी उतना अच्छा रैंक नहीं था मेरा। फिर आई वाज जस्ट, तब मेरा कॉलिंग लेटर भी नहीं आया था सर। मुझे लग रहा था कहीं अटक गया, फिर इस बार नहीं आ पाएगा। आई वाज वेरी पेसिमिस्टिक अबाउट इट। तब आई वाज इन अ स्टेट वेयर लाइक आई फेल्ट आई वाज नोवेयर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। So now that I'm out of it, I feel like life isn't hard. Life isn't hard, but you shouldn't take it easy. Say that again. So life isn't hard. You shouldn't take it like ये बहुत मुश्किल है, but you should never take it easy as well. कि हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? वर्क करो। जैसे कि बोल सकते हैं कि सर, लाइफ, ये जिंदगी उतना कठिन नहीं है, लेकिन आसानी में मत लेना। हाँ, जिंदगी कठिन नहीं है, मतलब एंजॉय करो जिंदगी को, एंजॉय द प्रोसेस।
बट इतना आसान भी, मतलब मेहनत तो करनी पड़ेगी। मैं तो जी बताता सर। हूँ ये किस्मत में नहीं है, ना इधर है, ना वो स्टार्स डिसाइड करते हैं, ये आपका अपना हार्ड वर्क डिसाइड करता है। जी सर, जस्ट कीप अप द वर्क। हाँ, जस्ट कीप अप, बी कंसिस्टेंट, एंड अपने आप को मोटिवेट करके रखो, अच्छे लोगों की संगति रहो। हाउ मच इज कंपनी इंपॉर्टेंट? बहुत से बच्चे कहते हैं चारों तरफ नेगेटिविटी है, घर में नेगेटिविटी, स्कूल में कॉलेज में नेगेटिविटी, बहुत ही इम्पैक्ट अच्छा नहीं है। तो व्हाट विल यू एडवाइस देम? So fortunately, sir, I've had very good friends since my class 12th. So जैसे कि आप देख सकते हैं सर, मेरा all my friend circle में थे जो सभी अभी आर्मी में, दो तो पैरा एसएफ में है सर। So आगे आया कॉलेज में, आई मेट वेरी गुड ऑफ टू ऑफ माई गुड फ्रेंड्स, सो जो अभी तक भी मेरे साथ कांस्टेंट टच में। सो आई फील लाइक दोस्त में जब भी आप चूज करते हो तो जेन्युइनिटी देखो सबसे पहले। If they are genuine, they're always going to be with you together, with you, supporting you forever. So आप जब अच्छे संगति में रहते हैं तो आपका ऑटोमेटिकली इन्वायरमेंट एक प्योर पॉजिटिव, हमेशा ही पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। सो मी एंड माय फ्रेंड्स, when we were in college, we used to spend time playing, studying. So we were uh, we had a common point where we were all three of us, we were very good at sports, and we were academically sound as well, so all three of us. So we were a very formidable trio in our college. ग्रेट। नहीं तो लोग कहते हैं तीन नहीं होने चाहिए, है ना, यू शुड बी द टू और फोर इन बडीज, बट यू वर थ्री बडीज। Yes sir. तो ये आपने एक और बड़ी अच्छी बात कही, यू मस्ट बी एकेडमिकली साउंड, है ना, वॉट एवर यू आर Yes डूइंग, उसको आप नहीं छोड़ सकते। इफ यू आर नॉट एकेडमिकली वीक अगर हो आप, फिर ये एग्जाम तो पास होंगे ही नहीं, जबकि सीडीएस इज अ वेरी सिंपल एग्जाम, yes sir. है ना, बहुत सिंपल एग्जाम है अगर आप Yes sir. कंसिस्टेंटली काम करो, बट यू हैव टू वर्क। Yes sir. अच्छा, लास्ट क्वेश्चन आई वांट टू आस्क यू इज हाउ मच इज द रोल ऑफ फैमिली, फैमिली सपोर्ट, योर मदर, योर फादर, फादर पुलिस में तो ही मस्ट बी, एंड वहां आपके तो हिल्स में इट टेक्स टाइम टू रीच होम, है ना? Yes. तो मदर एंड सिस्टर एट वन प्लेस, फादर कहीं है, तुम हॉस्टल में हो, तो फैमिली को कैसे, व्हाट इज द सपोर्ट सिस्टम, हाउ डू यू यूज दैट? So my family is my first source of inspiration, I would say, sir. I have utmost gratitude towards my parents for what they have done for me till now. So I think I can never repay for what they have done for me. So whatever I can through my this service, I would like to give it all to my parents. So they were the first source of inspiration for me. जैसे कि आर्मी में भी first source of inspiration would be my father itself. So मेरा father सिक्किम आउट पुलिस में थे सर। सो जब से मैं छोटा था, जब मेरा छुट्टी होता था 2 महीने का, समर वेकेशन 1 महीने का, तो ज्यादातर मैं अपने पापा के साथ ही रहता था, उनका आउट पोस्टिंग में, उनका कैंप्स में। सो वहां पे मुझे गन्स, इंसास, स्टेन गन्स, रिवॉल्वर्स, ये सब से फेमिलियराइजेशन हो चुका था। फिर द बटालियन वे ऑफ लाइफ, फिर हाउ माय फादर रिस्पेक्टेड हिज यूनिफॉर्म। So that put the seed in me for my inspiration for the army. So बाद में फ्रेंड्स मिले, फिर आर्मी का अवेयरनेस हुआ, फिर आर्मी का सिपाही ज्वाइन करना था, वो नहीं हो पाए, फिर आगे आया कॉलेज में, फिर कॉलेज में फिर इधर उधर ऑनलाइन सोर्सेस से देख लिया एंट्रीज, फिर वहां से फोकस किया सीडीएस के लिए, फिर आज हो गया। So और मम्मी has always been my greatest source of inspiration. She has always been a great one of the greatest homemakers I've ever seen. So मेरा पापा, I think it's almost similar to like army way of life. So मेरा पापा when he was an NCO, like how you see it in the army, when he was a lunch nights. So at that point of time, छुट्टीज were like very limited. We used to get very limited. So much so that they tell me like when I was born, he wasn't given chutti at that point of time too. But somehow he managed it, and he was there when I was being born. So ऐसा था, so मम्मी ने वो सब झेला है, फिर इतना साल घर में ही रहे. She didn't follow him to the camps. She sat in home. She focused on my father's parents. She sent off my grandparents very honorably, and अच्छा केयर किए थे.
फिर अपब्रिंगिंग में भी whenever टाइम मिलता था मम्मी के साथ घर में, जब भी छोटा छोटा छुट्टी होता था, फिर I used to spend a lot of time I used to spend with my mom. So my greatest bonding would be with my mom. बहुत अच्छी बात बताई आपने कि फैमिली वैल्यूज, वैल्यू सिस्टम, दिस इज व्हाट विल डेवलप्स कैरेक्टर। कि आपने यू सीन योर मदर टेकिंग केयर ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स, है ना? जी have seen. So ये जो bonding and the character that you shown of your mother, and rightly so, that is come into you. You being in hostel, आपने अपनी mother को देखा किस तरीके से she is brought you up. So it's amazing, Gyalchen. Someday maybe I'll get a chance to meet your mother and your father. दुनिया बहुत छोटी है ना? जी और सर, love to see you in uniform. लव टू सी यू इन यूनिफॉर्म, है ना? अमेजिंग अमेजिंग। मतलब मैंने इतने बच्चों से बात की और अब तो मैं बीओसीसी कोर्स, बीओएसी कोर्स, यूट्यूब एंड पता नहीं डीयू के एवरी कॉलेज जाता रहता हूं मैं। बट जो मुझे आपसे बात करके मजा आया ना, दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट यंग मैन आई हैव इंटरेक्टेड विद। यू आर अमेजिंग। थैंक यू सर, थैंक यू सर। Thank you so much. Anything last में you want to advise those who are now appearing for CDS and SSB वगैरह के लिए ओवरऑल आप क्या उनको बताना चाहोगे? How easy they should take it, रिलैक्स करें, एंजॉय करें इस प्रोसेस को? डेस्परेट हो जाते हैं वहां पे लोग। जी सर, आई वुड जस्ट से टेक इट एज अ जर्नी, एंजॉय द जर्नी। ये फिर प्रिपरेशन का जर्नी फिर से वापस नहीं आएगा। सो एंजॉय द जर्नी, पार्ट ऑफ लाइफ है। लर्निंग को एंजॉय करो, फिर उसको एज अ बर्डन मत लो, बिकॉज दैट्स टेकिंग यू समवेयर। तो आपको खुशी खुशी करना चाहिए। फिर ये मत सोचो कि अगर नहीं हुआ तो, ये सोचो कि अगर हो गया तो। So that's the always keep a positive mindset when you are focused to some goal. And students and young aspirants from far off places like me, don't lose hope. Be strong. You can do it. If I can, you can. एंड आर्मी नीड्स, आर्मी नीड्स, ये भी मैं बता दूं, आर्मी की जरूरत है, देश की जरूरत है। मैं तो बहुत लोगों को बताता, हमें कोई हाई फाई स्कूल्स के बच्चे नहीं चाहिए, हमें गांव देहात से, हमें जेसीओज, एनसीओज, फार्मर्स, स्कूल टीचर्स, शॉपकीपर्स, इनके बच्चे चाहिए टू लीड द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ लीडरशिप ऑफ द इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। आई एम कन्विंस्ड, मैं इस बात में बहुत कन्विंस्ड हूँ, जी सर। है ना? वी आर गोइंग टू बी, पीपल लाइक यू विल बी द बैकबोन ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। Hopefully. यू विल बी, यू विल सी, आप देखना ओटीए में भी आपको बहुत। सो Gyalchen, इट्स बीन सच अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू एंड थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद मी। आपने मुझे गुरु दक्षिणा दी जब मैंने, यू मैसेज्ड मी कि यू गॉट रिकमेंडेड, यू सेंट मी योर पिक्चर, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने कहा भाई आपसे मैंने कनेक्ट किया एंड सिक्किम इज सो ब्यूटिफुल, सो ब्यूटिफुल, रियली दिस इज अमेजिंग। बहुत बहुत congratulations to you, to your father, to your mother, and to your village, and to your school. So you should visit Sikkim sometimes. I would love to host you. I would love to come. I would love to come. I've been to Northeast number of times. अभी मैं तेजपुर जा रहा हूँ, एक स्कूल ने मुझे इनवाइट किया है। नेक्स्ट मंथ आई एम कमिंग टू तेजपुर एंड आई लव पीपल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। कहीं ना कहीं मुझे बहुत कनेक्ट लगता है कि वी मे बी डिफरेंट इन फीचर्स एंड लैंग्वेज, बट गांव की लाइफ काफी हद तक सबकी एक जैसी है, स्पेशली जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, जिनके पेरेंट्स, तुम्हारे पुलिस में, मेरे फादर फौज में थे, वो कहाँ वो कभी आए ही नहीं। हम कब पैदा हुए, मतलब इनिशियल इयर्स आर वेरी टफ एंड मदर्स आर वर्किंग 24/7। Yes sir. और सबसे ज्यादा जॉय भी मदर को ही मिलता है। आई कैन नेवर फॉरगेट द डे। तुम्हारे टाइम पे तो फोन था, तुमने फोन कर दिया होगा घर में मदर को कि मेरा हो गया है सिलेक्शन। I just reached, sir, 2 days back, sir. But so the happiness on my parents' face, I would never forget that throughout my life. That was the most priceless moment of my life. या एब्सोल्युटली। और 40 साल पहले Gyalchen, देयर वाज नो फोन्स, देयर वाज नो फोन्स एट ऑल। ठीक है, कोई फोन नहीं थे।
तो जब मैं गया, माय फादर वाज इन नागालैंड, पोस्टेड इन नागालैंड, ही वाज अ सूबेदार मेजर। मदर मेरी जींद में थी, और उन्होंने पूछा हमें कैसे पता चलेगा। मैंने कहा अगर मैं 5 दिन में वापस आ गया छठे दिन तो समझ लो नहीं हुआ है, बट अगर मैं नहीं आया और आप देख रहे हो 7 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, सोच लेना कि भाई शायद हो गया है। सो मेडिकल, क्योंकि मेडिकल वही होता है, देयर इज नो वे टू इन्फॉर्म। सो आई जी रिमेम्बर सर। जब मैं पहुंचा ट्रेन में, मेरा भोपाल में था एसएसबी, मैं ट्रेन में पहुंचा शायद दिल्ली तक, दिल्ली से मैंने बस ली रोहतक होते हुए, और मैं शायद दोपहर के टाइम या कुछ पहुंचा। तो तब हमारे पास भैंस होती थी, मेरी मदर भैंस का काम भी करती थी, बिकॉज मनी वॉज वेरी लिटिल, यू नो, बहुत कम पैसे होते थे घरों में। एंड शी वॉज वर्किंग इन द होम, एंड आई वेंट इनसाइड एंड गेव हर अ सैल्यूट। So that is really priceless moments. Yes, these are very priceless moments. And every rank, Gyalchen, that I got, I ensured my mother was there to pick me. Other than when I became a general, she had gone. My dad was there. Okay. I would try to do the same. Yeah, you must. Every rank, your mother must, your dad, mother, their hand must be there. ठीक है? जी सर। चलो, थोड़ा इमोशनल हो गया लास्ट में, Gyalchen, sharing my story with you and listening to your story. So thank you very much, and we will stay in touch and continue to do what you're doing, even in OTA. Keep taking part in sports, keep reading, because Army requires people who are well read and who are physically fit. Yes, sir. So it has been a total honor for me, sir, today. मजा आ गया ना बात करके? जी सर बहुत। Unstructured talk. जी सर। Thank you, Gyalchen. Thank you very much. All the best to you. Jai Hind. Thank you. It's been an honor, sir. Jai Hind, sir. नमस्कार सर। मैम नमस्कार। नमस्कार सर। आप कैसे हैं? ठीक ही हूँ सर। आपका बेटा हीरा है, हीरा। थैंक यू सर। इससे he got inspiration from you, बोल रहा था। he got inspiration from me, but असली इसकी सक्सेस का हक आपके पास है। You are the one. You are the one. You are an amazing person, ma'am. Thank you sir. Thank you sir. So sir, father. he's my father. अरे अरे, हाँ, तो तीनों एक फ्रेम में आ जाओ, तीनों एक फ्रेम में आ जाओ। अरे साहब, ये यस, दिस इज द पिक्चर, दिस इज द पिक्चर। आपका बेटा हीरा है, और थैंक यू। आप दोनों जो है धन्य हो, ऐसा बच्चा आपने जो है पाला है, पैदा किया है। अमेजिंग सर, इसको सर को आशीर्वाद देना चाहिए सर। इसीलिए मैंने इसको इंटरव्यू के लिए बुलाया, और ये 2 साल से मेरे साथ जुड़ा हुआ है ये बच्चा, और कहता है कि सर जैसे आप बात करते थे मैं वैसे ही कोशिश करता था सारी चीजें फॉलो करने की। जी सर। अमेजिंग। तो सब कैसा लग रहा है, बेटा ऑफिसर बन रहा है? सर बहुत खुशी लग रहा है सर। खुश भी लग रहा है, फिर थोड़ा डर भी लग रहा है सर। माँ को डर ही लगता रहता है बेटे को क्या होगा। जी मेरे को तो पूरा खुश है सर। तो आपने जहां जहां इसकी पोस्टिंग होती है, शादी से पहले भी जाना है इसके पास, ठीक है? पूरा इंडिया इसने घुमाना है आपको। अच्छा सर। हर जगह जाना है। अगर ये जोधपुर जाता है, आपने अपना बैग पैक करके वहां इसके पास हफ्ता 10 दिन रह के आना हर ट्रैवल करने वाले से। जी सर, आई विल टेक देम, श्योर। या एवरी स्टेशन यू मस्ट टेक देम। और दूसरी चीज मैंने जो ग्यालचन को बताया है कि हर प्रमोशन उसका जो है, आपने मदर फादर ने इसको जो है प्रमोट करना है। जी सर। यस सर। एभ्री रैंक चेन्ज गरेर चाहिँ चेन्ज गर्नु लागि चाहिँ आमा र आपालाई बोलाउनु भन्नु। ए तो नाइस मीटिंग यू। हाँ, बहुत अच्छा लगा। और ये मैंने ऐसे ही सोचा कि मदर है, मुझे क्या पता मदर फादर दोनों यहीं पे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करके। एंड सिक्किम के गांव से ये बहुत अच्छा ऑफिसर बनेगा आपका बेटा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू।
थैंक यू। Thank you, sir, so much, Gyalchen, sir. बहुत अच्छा लगा यार. This to meet your parents was really icing on the cake. Yes, sir. So I think you could see how happy they was. Yeah, but they would be. They would be. चलो, we'll end it here. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. बहुत अच्छा लगा. Keep inspiring younger people from your area. Ji, sir, I would always. All the best. Bye bye. Thank you, sir.